Hello everyone, this video is for class 12th AI students and we are going to discuss MCQs from second unit, that is model life cycle. So the first MCQ is, which of the following is not a step of AI or machine learning life cycle? Project scoping, deployment, model building, these all three are the steps. So it is asking which is not a step. So option D is the correct option here. Next is, in order to implement successful AI projects, a student needs to adopt a dash approach to cover each step of AI or machine learning life cycle. So which type of approach should be taken? Comprehensive, collaborative, conditional और integral. So its answer is comprehensive. So ऐसे टाइप के MCQs भी आ सकते हैं जो जिनका आंसर फाइंड करना मतलब बहुत जल्दी आपको आंसर समझ नहीं आएगा, तो इसके लिए आपने स्टडी मटेरियल अच्छे से पढ़ा होना चाहिए. देन ओनली यू विल बी एबल टू मार्क द आंसर करेक्टली. जब ऐसे स्पेशली जब इस टाइप के MCQs आ रहे हैं जो थोड़े से कंफ्यूजिंग है, जो एकदम से समझ में नहीं आएगा जिसका आंसर. Next is, dash phase is essentially an iterative process comprising all the steps relevant to building the AI or machine learning model. So when we will see all these phases, तो कौन सा phase जो है वो iterative process है, that is design phase. Next is, in scoping phase, which of the following is included? Define the strategic business objectives and desired outcomes of the project. This is correct. Select, align all the different stakeholders expectations. This is also correct statement for scoping phase. Define the success metrics. Yes, return on investment and define the success metrics. These all are included in scoping phase. तो इसका आंसर होगा all of the above. Next is, selecting the AI or machine learning use cases and being able to evaluate the dash is critical to the success of any data project. So ये जो लाइन है ये भी कौन से फेज की है? स्कोपिंग फेज की है और इसका आंसर है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ any data project. Next, once the relevant projects have been selected and properly scoped, so यहाँ पे scoping हो गई है, the next step of machine learning life cycle is the dash phase. So after scoping we perform designing. Next is, which of the following is not a step in design phase? Data acquisition is a step, data exploration is also a step, data cleaning भी step है. So deployment design phase में नहीं आता है. So option D is the correct option. Now eighth one, another key success factor to consider is dash. How will you determine, measure and evaluate the performance of each iteration with regards to the defined return on इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव? अनदर की सक्सेस फैक्टर जो हमें कंसिडर करना चाहिए, दैट इज़ मॉडल वैलिडेशन. नेक्स्ट इज़, वी हैव टू मैच द फॉलोइंग. सो ओपन लैंग्वेज इज़ पाइथन, तो 1 का C. तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो इसमें 1 का C है, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Next, depending on your choice of the AI platforms, you need to visit the appropriate web pages for this documentation. Which of the following is not a correct option for this? तो कौन सा इसमें से appropriate web page नहीं है for visiting for the documentation? Microsoft Azure AI platform, this is correct. Big ML is also correct. Infosys Near Resources is also correct. So the last one, Java Resources, is not a appropriate web page here, so this will be the correct option. Next is, which of the following statement is not correct for testing phase? The volume of test data can be large, this is correct. Your team must create test suites that help you validate your ML models, this is also correct. Regulatory compliance testing and security testings are not important, so these are important और यहाँ पे हमें not correct बोला, तो this one is not correct. So option C is the correct option here. Next, assertion, regulatory compliance testings and security testings are important, this we know. This statement is correct. अब इसका रीज़न देखते हैं. System might not deal with sensitive data. ये अगर यहाँ पे not को अगर हम हटा दें, सिस्टम माइट डील विद सेंसिटिव डेटा, इसके लिए हमें सिक्योरिटी टेस्टिंग और रेगुलेटरी कंप्लायंस टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है. बट यहाँ पे नॉट लिखा है, तो ये जो रीज़न है ये क्या हो गया, यहाँ पे फॉल्स हो गया. ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. Next MCQ, this is very easy one. Which is the first fundamental step when starting an AI initiative? So project scoping is the first step in AI model life cycle, and it is fundamental step when we start any AI initiative.
Next, human dash in selecting test data can adversely impact the testing phase. So if you are committing human errors या जो भी यहाँ पे मतलब होगा, तो टेस्ट डेटा सेलेक्ट करते वक्त अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा टेस्टिंग फेज में. सो हेयर the correct option is biases. Biases means errors. Next is your dash team should test the AI and ML algorithms, keeping the model validation, successful learnability and algorithm effectiveness in mind. So which team? Testing, development, deployment or designing? So obviously its answer is testing team. Next, 16th one, test data should include all relevant subsets of dash data. Options are training, test, split, none of the above. So in case अगर आपने स्टडी मटेरियल अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, एक एक लाइन अच्छे से आपको नहीं पता होंगी, तो ये हो सकता है कि यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाएं कि ट्रेनिंग इसका आंसर है या टेस्ट इसका आंसर है. सो इट्स आंसर इज ट्रेनिंग डेटा, as the same line is mentioned in the study material. Next, dash means if data you collect is no good, you won't be able to build an effective AI algorithm and your whole project will collapse. So options are garbage input, garbage output, garbage in, garbage out. So we will see all the options. So option B will be the correct option. Now next one, which of the following is not correct for design or build phase? Let's see the options. It can take from a few days to multiple months. ये correct है. Design phase is essentially an iterative process. This is also correct. This is arguably the most important part of your AI project. ये statement wrong है क्योंकि scoping is the most important part of your AI project. So this option C will be the correct option. Now next one, which of the following is not a open framework? Scikit-learn, XGBoost, H2O. सो यहाँ पे H2O जो है ये आपका डेवलपमेंट टूल है. सो दिस इज़ नॉट अ ओपन फ्रेमवर्क. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर. नेक्स्ट, देर इज़ अ ग्रेट फ्रेज दैट करेक्टराइजेज दिस प्रोजेक्ट स्टेज, गार्बेज इन गार्बेज आउट. तो ये जो है गार्बेज इन और गार्बेज आउट कौन से प्रोजेक्ट स्टेज में इंक्लूड होता है? सो दिस इज़ प्रोजेक्ट स्कोपिंग. सो दीज आर द MCQs फ्रॉम सेकेंड यूनिट. सेकेंड यूनिट बहुत छोटी है, इससे ज़्यादा MCQs जो हैं वो आपके ओपन फ्रेमवर्क, ओपन लैंग्वेज, जो भी टूल्स हैं फॉर AI मॉडल, और जितनी भी इसकी फेजेस हैं, छोटी सी यूनिट है तो इससे MCQs जो है ओब्वियसली जितना इसमें कंटेंट गिवन है उसी से MCQs बनेंगे. तो आपको अच्छे से ये पढ़नी है. एंड दिस मच फॉर दिस वीडियो. आई होप दिस वीडियो एंड दीज MCQs आर गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर योर टुमारोज एग्जाम, and I wish you all the best for tomorrow's exam. Thank you for watching this video.